आप जो अब सीन देखने वाले हो उसे बनाने के लिए ना ही मैंने कोई कैमरा यूज किया है, ना ही कोई एक्टर हायर किया है, ना ही किसी VFX स्टूडियो की हेल्प ली है। इस वीडियो का हर एक फ्रेम AI की मदद से जनरेट किया गया है। और सरप्राइजिंग बात, ये किसी एक्सपेंसिव हॉलीवुड सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि एक नॉर्मल कंप्यूटर पर बनाया गया है। पहले सिनेमैटिक सीन को देखिए और फिर आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसे बनाने के लिए मैंने कौन सा AI टूल यूज किया है और कौन से वर्कफ्लोज यूज किए हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। If something happens to me, please take care of her. I'm sorry. We couldn't save your wife, but you have a baby girl. You took your mother away the moment you were born. I don't even know how to look at you. She's so beautiful. We want to adopt her just like this. This is your new home now. Look at you. Can't even serve properly? It's not safe for you to be alone here at night. Please, let me help you find a safe place to rest. Come with me, I know a warm place nearby. Watch my angle. Precision, feel the flow. I have to go back. Thank you. Aren't you the one traveling east in search of gold? Finally. I have to go back. I'm sorry. We couldn't save your wife, but you have a baby girl. I'm sorry. It wasn't my fault. Mom's time was already over. Don't leave her. It was all destiny, please. I am your daddy. तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी होगी, क्योंकि नॉर्मल बंदों के हाथ में नहीं होता कि ऐसी सिनेमैटिक वीडियोस बना पाए। और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी वीडियोस बनाने सीखनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो आप मुझे फॉलो कीजिए
मुझे सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा लाइक कमेंट मेरी हर एक वीडियो को अपडेट चेक करते रहिए, क्योंकि बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है गाइस। और साथ ही साथ मैं अभी यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन में और साथ साथ जब एंड स्क्रीन आती है वहाँ पर अपनी 3 वीडियोस की एक लिस्ट दूंगा, जहाँ से आप चेक कर पाएंगे। और मेरे चैनल पे भी जाइए, वहाँ पर चेक कर पाएंगे कि ये वीडियोस कैसे बनाई है मैंने। और बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना भूलें। गेट इनटू नॉलेज। तो कल फिर मुलाकात होगी गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।